Hello everyone, I'm Raki and today in this session I'm going to start with a new chapter number 7, Equilibrium. So in this video I'll be beginning with the first question of this chapter 7.1 and it's on page number 224 of NCERT text class 11. So let's see what the question is. So the question is, a liquid is in equilibrium with its vapor in a sealed container at a fixed temperature. A liquid is in equilibrium with its vapor in a sealed container at a fixed temperature. The volume of the container is suddenly increased. The volume of the container is suddenly increased. We need to tell what is the initial effect of the change. What is the initial effect of the change on vapor pressure? How do rates of evaporation and condensation change initially? And what happens when equilibrium is restored finally? And what will be the final vapor pressure? So let's begin with the first part of the question. आपको कंडीशंस पता चल चुकी हैं कि एक लिक्विड इक्विलिब्रियम में है अपने ही वेपर्स के साथ में इन अ सील्ड कंटेनर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर. फिर कहा गया है कि एकदम से वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इंक्रीज अप हो जाता है. एकदम से वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इंक्रीज हो जाता है. तो बताइए व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर. Fine. So I just want to tell you that if the volume of the container is increased suddenly, then the vapor pressure decreases initially. ठीक है, एकदम से अगर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ जाता है तो इनिशियली वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा. ठीक है, दिस इज बिकॉज इसका रीजन क्या है. देखिए, वेपर तो अभी कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है अपने वेपर्स के साथ में. तो अभी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर्स हैं इन इक्विलिब्रियम विद दैट लिक्विड. लेकिन एकदम से अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है कंटेनर का तो वेपर्स को इतना जल्दी टाइम नहीं मिलेगा कि वो इंक्रीज अप हो जाए. वेपर्स ऑल्सो नीड टाइम टू जस्ट बी इन बल्क. तो अगर एकदम से हम इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर तो जो अमाउंट ऑफ वेपर्स है वो तो सेम रहेंगे. अमाउंट ऑफ वेपर्स क्या होंगे, सेम ही रहेंगे. अब सेम अमाउंट ऑफ वेपर्स जो होंगे वही डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओवर द लार्जर वॉल्यूम, है ना. और यही एक रीजन है कि हमारा वेपर प्रेशर इनिशियली डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड देन द वेपर प्रेशर वुड डिक्रीज इनिशियली. दिस इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ vapor remains the same but the volume increases suddenly. As a result, the same amount of vapor is distributed in a larger volume. ठीक है, so I think the reasoning behind the part A of this question is clear to you all. Now coming on to the part B, how do rate of evaporation and condensation change initially? See, from the question it is clear that the temperature is constant. So if the temperature is constant then the rate of evaporation will also remain constant. ठीक है, अब देखिए, when the volume of the container is increased then the density of the vapor phase decreases. ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इंक्रीज कर रहा है देन द डेंसिटी ऑफ द वेपर फेस क्या होगी, डिक्रीज करेगी. इसकी वजह से जो रेट ऑफ कोलिजन है किसके बीच में, द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन द वेपर पार्टिकल्स, डेंसिटी जो डिक्रीज की है वेपर फेस की उसकी वजह से जो रेट ऑफ कोलिजन है बिटवीन द वेपर पार्टिकल्स वो भी डिक्रीज करेगा. एंड सो इज द कंडेंसेशन. कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो भी डिक्रीज करेगा. ठीक है, सो सिंस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट. व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इंक्रीज्ड द डेंसिटी ऑफ वेपर फेस decreases. As a result, the rate of collision of the vapor particles also decreases. Hence, rate of condensation decreases initially. ठीक है, so this was all about the part A and part B of this question. Now I'll be explaining you about the part C of this question.
So, the part C of the question is, what happens when equilibrium is restored finally, and what will be the final vapor pressure? So, we need to tell about the happening with the equilibrium when it has been restored, and what will be the final vapor pressure. See, when the equilibrium is restored, then rate of evaporation is equal to the rate of condensation. Fine. And actually, lastly, I just want to say is that the final vapor pressure will be same as it was original. The final vapor pressure जो होगा वो बिल्कुल same होगा as it was in its original situation. It is because the vapor pressure of a liquid depends only on temperature and not on the volume. Fine. So when equilibrium is restored, rate of evaporation is equal to the rate of condensation. The final vapor pressure will be same as it was originally because vapor pressure of the liquid depends only on temperature and not on volume. So this was all about this question, and I have discussed all the three parts A, B and C regarding this question, and I think there would not be any doubt regarding this question. But I can't say of any one of you. If you are having any doubt regarding the solution, then please do mention your doubts in the space given below. And it's me, Rakhi, saying you all goodbye.